Today topic is pneumococcus. Introduction. What is pneumococcus? Pneumococcus family is Streptococci. Catalase negative, gram-positive cocci arranged in pairs or chains due to the single panel of divisions. Important members Streptococcus and Enterococcus and Pneumococcus. Classification is Streptococci oxygen requirement, presence of the oxygen requirement, aerobes and facultative and aerobes, and second is obligated aerobes and peptostreptococci. Basis of the hemolysis, alpha hemolysis and beta hemolysis and gamma hemolysis. Alpha hemolysis in viridins, streptococci and pneumococcus, and beta hemolytic streptococci, and gamma hemolytic is enterococci. Lenzifil groups based on the group specific C carbohydrate antigens. 20 serogroups A to V except I and J. Group A Streptococcus pyogenes based on the M proteins, more than 100 M serotypes. Streptococcus pneumoniae is also called Diplococci pneumoniae. And phylum is a Firmicutes, class is a Bacillus, order is Lactobacilli, and family is Streptococci, genus Streptococci, and species Streptococcus pneumoniae. Gram-positive lanceolated Diplococcus, alpha hemolytic, present on the convulsions on the upper respiratory tract infections. Diplococci pneumoniae classified Streptococcus pneumoniae, leading to cause of the lobar pneumonia and otitis media in children and meningitis in old age except neonates. Neonates के अंदर group B hemolyticus. फिर different between the Streptococcus pneumoniae and viridans. Arrangement Streptococcus pneumoniae in gram-positive cocci in pairs, viridans in GPC in long chains. Morphological step pneumonia in lanceolate, flame-shaped, viridans and round and oval. Capsules is pneumonia is present and viridans is absent. On blood agar colony, ceramicoin colony. On viridans, convex-shaped colony. Liquid mediums in pneumonia, uniform turbidity, and viridans Streptococci granular turbidity. Bile solubility, soluble in bile, insoluble in bile. Inulin fermentation in pneumonia ferment, and viridans non-fermenter. Optocin sensitivity is pneumonia sensitive and viridans is resistance. Mice pathogenicity, pathogenic and non-pathogenic. Valence factors is capsular polysaccharides, carbohydrate antigens, pneumolysine and autolysine. Other pneumococcal surface protein A and IgG protease, pneumococcal surface protein C, adhesions and pneumococcal surface adhesions type A. This is clinical manifestation pathogenesis. Pneumococcal disease like invasive disease and non-invasive disease. Invasive disease in the bacteremia like meningitis, endocarditis, pericarditis and septic arthritis. Second is non-invasive pneumonia, emphysema, pneumonic effusions and otitis media and sinusitis. This is the pathogenesis of the root to the infections like colonization of the respiratory tract में colonization हुआ, फिर replication हुआ nasopharynx के अंदर, spread to adjacent sites like जैसे pneumonia and middle ear otitis and sinusitis. Pneumonia से blood के अंदर cause the meningitis, viral infection and malnutrition, mucosal damage. This is the pneumococcus pathogenesis like causes the meningitis, sinusitis, otitis media. Pneumococci are one of the most common bacterial causing the pneumonia. Both lobar and bronchopneumonia may also cause acute tracheobronchitis and emphysema. Initially, pneumonia is required escape for the mucus defense and bacterial migration to the alveoli. Bacteremia may complicated pneumococcal pneumonia result in the metastatic involvement of the meninges like joint and endocardium. Initiations by the escape from the mucus defense mechanism, bacterial migration to the alveoli, colonization of the caries, and pneumolysis other enzymes release cause the pneumonia. This diagram showing the trachea, lungs, bronchial tubes, bronchi, alveoli, and inflamed the bronchi. And serotypes of involved in the lobar pneumonia. Adult types is 1 to 8, children's types 6, 14, 19 and 23, while in serotypes is 3.
Epidemiology, source of infection, upper respiratory tract carrier state. More than 90% of children of 6 months 5 years become colonized in the 3 to 4 month age. Adult majority are more than 65 years of age. Carriers persist of 2 to 3 weeks. And mode of transmissions, inhalation of the contaminated droplet nuclei, infection, colonization, and carriers like cause the disease, acute the host immunity, and risk factor. Risk factor: children's less than 2 year, immature immune system, inability to produce adequate antibody against capsule antigens, and splenectomy, sickle cell disease, other hemoglobin pathogenesis. Site of the destruction of the capsulated bacteria, underlying comorbid condition like chronic lung diseases, heart, kidney diseases, liver diseases, typhoid mellitus, immunosuppressants like HIV infections, underlying viral respiratory tract infection like influenza, and defect the upper respiratory tract clearance mechanisms like OPD, asthma, and smokers. लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अपन क्या क्या करेंगे? सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइट, डायरेक्ट स्मेयर या माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे, कैप्सूल एंटीजन डिटेक्शन करेंगे, कल्चर एंड कल्चर स्मेयर्स के बेसिस पे अपन डायग्नोसिस करेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन चेक करेंगे, बायोसोलबिलिटी एंड ऑप्टिचिन सेंसिटिविटी, सीरोटाइपिंग एंड मॉलिक्यूलर डिटेक्शन, नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स लाइक AST. स्पेसिमेन कलेक्शन CSF है, CSF कलेक्ट करेंगे, ब्लड कलेक्ट करेंगे. ग्राम स्टेनिंग में अपन को डिप्लोकोकाई दिखेगा, लैंसुलेट शेप डिप्लोकोकाई. सेकेंड अपना एंटीजन डिटेक्शन में कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, द एंटीजन इन्वॉल्व, एंड स्पेसिमेन CSF, ब्लड, यूरिन्स. कोगुलेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स, co-agglutinations, latex agglutinations, counter immunoelectrophoresis, ELISA. एडवांटेज क्या है इसके एडवांटेज है बेटर कंपेयर टू द ग्राम्स एंड कल्चर्स, क्विक मेथड्स होता है, शॉर्ट टाइम होता है अपना, और आर डिटेक्टेड इन द बहुत इंटैक्ट डिग्रेडेड फ्रॉम द स्पेसिमेंस. डिसएडवांटेज क्या है इसकी? डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉलोनाइजेशन एंड इन्फेक्शंस. फिर क्रॉस रिएक्टिविटी ऑफ द एंटीजेंस और सम विरिडेंस प्रकार कॉस्टली होता है, लैक सेंसिटिविटी होती है. नेक्स्ट अपन co-agglutinations टेस्ट फॉर CSF. तो यूज़ द डिटेक्ट ऑफ द निमोकोकस एंटीजन इन द CSF. रिएजेंट्स यूज़ करेंगे अपन. इट इज़ द सस्पेंशन ऑफ द किल्ड स्टेफ ऑरियस कोटेड विद टाइप ऑफ स्पेसिफिक निमोकोकल एंटीबॉडी. द एंटीबॉडी इज बाउंडेड बाय देयर FC फैक्टर्स of structure of the protein A and staphylococcal cell walls. Type 2 pneumococcal reagents, type specific reagents, species specific and control reagents. Gamma globulin form the non immunized rapid capture with protein A. Principles क्या है इसका? Principle है when pneumococcal antigen are added they causes of co-agglutinated streptococcus visible on the slides. Procedure क्या है इसका? Heat CSF at 80 degrees centigrade for 5 minutes. Remove any RBC by the low speed centrifugations. Slide divided into 2 sides. Test. This is test under controls. Preheated CSF. 1 drop pneumococcal reagents and 1 drop control reagents. Mix thoroughly. Rock slides for 2 minutes and observe. These are Streptococcus aureus, the IgG antibody, FC protein, the antigen samples and fat. नेक्स्ट है अपना लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट. लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट में अपना क्या होगा? इट इज़ द रैपिड टेस्ट क्वालिटेटिव डिटेक्शन फॉर द pneumococcal samples antigens present in the CSF and urine, serum, sputum, pleural fluid and blood cultures. Valgone reagents consist of the polystyrene latex particle coated with antibody that react with the all recognized serological types of the pneumococci. Latex particles होंगे presence of sufficient amount of the homologous antigen and agglutinations. Show the agglutinations. Culture most important is a Strep pneumoniae is a fastidious organism that not grow basal media like Na nutrient agar. Specimen are located in the enriched media like BA, chocolate agar, incubated 24 hours at 37 degrees Celsius, presence of the 5 to 10% of the CO2. ब्लड अगार पे अपन को क्या देगा? 24 आवर्स या 18 आवर्स इंक्यूबेशन के बाद ब्लड अगार पे अपन कॉलोनी देखेंगे. तो कॉलोनी आर स्मॉल 0.5 to 1 mm एंड डॉम शेप एंड ग्लिस्टरिंग सराउंडिंग बाय द ग्रीन डिस्कलरेशन लाइक अल्फा हेमोलिसिस. ऑन फर्दर इंक्यूबेशंस
colonies become flat with raised edges, central depression, autolysium enzymes checker appearance. This appearance consisting about the कैरम कॉइन कॉलोनी. तो अपन को बी ए पे जो है स्ट्रैप निमोनिक कॉलोनी कैरम लाइक कॉलोनी होती है. दिस इज द स्ट्रैप निमोनिक कॉलोनी लाइक जो डेमोस्ट्रेंस या कैरम कॉइन अपीयरेंस लाइक फ्लैट कॉलोनीज शोन ऑन ब्लड agar. Chocolate agar. Next, chocolate agar produce greenish discoloration, bleaching effects. Liquid medium such as the glucose broth, BHI, plain heart infusion broth produce uniform turbidity that undergo autolysis. इसके अंदर अपन को यूनिफॉर्म टर्बिडिटी दिखेगी. ओके, लिक्विड मीडियम के अंदर. नेक्स्ट अपना कल्चर स्मेर ग्राम स्मेर इज ए कॉलोनी रिवेल्स है लेंशियोप्लेट फ्लैम शेप्ड ग्राम पॉजिटिव इन पेयर्स. हैंगिंग ड्रॉप. हैंगिंग मोटिलिटी के लिए अपन देखते हैं हैंगिंग ड्रॉप तो नॉन मोटाइल. दिस इज ऑर्गेनिज्म इज नॉन मोटाइल. बायोकेमिकल रिएक्शंस कैटलिस्ट नेगेटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव, बायोसोल्युबिलिटी बायोसोल्युबल होता है प्लेट मेथड एंड ट्यूब मेथड. बायोसोल्युबल होता है ऑप्टोजन सेंसिटिव इन्यूलिन फर्मेंटेशन इज पॉजिटिव फर्मेंट द इन्यूलिन. नेक्स्ट अपना है बायोसोल्युबिलिटी टेस्ट. Pneumococci are biosoluble in constant of the viridans streptococci. Basis pneumococci exhibit the autolytic amidase that cleaves the bond between alanine and muriatic acid and peptidoglycans, resulting in the cell lysis. Amidase is inactive by the surface active agents like bile and bile salt. Method is plate method and tube method. प्लेट मेथड अपन किस तरीके से करेंगे प्लेट मेथड को. इसके अंदर अपन सोडियम डिऑक्सीकोलेट 2% 8 ड्रॉप एंड ट्यूब कि 10% 0.5 ml के अंदर. ऑब्जर्वेशन कॉलोनी डिसअपेयर लिविंग बिहाइंड द ग्रीन हिमोलाइसिस विद इन 30 मिनट्स. 30 मिनट्स के अंदर जो कॉलोनी है वो अपनी डिसअपेयर हो जाएगी ब्लड अगार पे. और अपन जो ट्यूब मेथड है इसके अंदर अपन क्या कहते हैं इनिशियली ट्यूब टर्बिड कल्चर बिकम क्लियर ट्रांसपेरेंट विद इन 15 मिनट्स. प्लेट मेथड के अंदर सोडियम डिऑक्सीकोलेट इज 2% एंड ट्यूब के अंदर 10% ऑफ डिऑक्सीकोलेट इज यूजेज. दिस इज द streptococci ये not lysed, this is the lysed, they are clear soluble in the bile. And biosolubility colony is lysed intact colony. This is colony lysed. This is the positive of the biosolubility. Next is optogen sensitivity. Optogen is sensitive. Optogen is a ethylene hydroquinone simple reliable test of the diagnostic pneumococci and viridans streptococci. Interpretations: strep pneumonia more than 14 mm John around mm disc indicated the susceptible to optogens. If John is less than 14 mm, alternative identification test should be done is biosolubility serology. Inulin fermentation test, pneumococci can be fermented. This is biosolubility and serology. Inulin fermentation test, pneumococci can be ferment inulin to the form acids. Viridans streptococci cannot ferment. Not optogen sensitive. Not optogen sensitive. This is optogen sensitive. Disc around the clear the John. It is the sensitive is the resistance. So this is topic. This is optogen sensitive streptococcal pneumonia. To identification of the streptococci pneumonia. Stop class. Next discussion is next class. Okay. Thank you.